गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर नितिन वर्मा, आई एम अ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और आज हम यहाँ पर हैं ट्रीटमेंट ऑफ वॉर्ट के लिए। वॉर्ट जिसे कि मस्से भी कहा जाता है, ये बहुत ट्रबलसम होते हैं और ये जाने जाते हैं वापस आने के लिए। हम इनको निकालते हैं, ये फिर आ जाते हैं। होता क्या है, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है बेसिकली, और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में ट्रेवल करता है। हमारे पेशेंट तौकीद को ये आया है इन्फेक्शन बार्बर शॉप से। ये बियर्ड अपने कराने गए थे बार्बर शॉप पर, और वहां पर ये इनको छोटा सा कट लगा, और उसके आफ्टर 2 वीक्स बाद इन्होंने देखा कि कुछ ग्रोथ हो रही है स्किन पे, और थोड़ा सा वो अपने काम में बिजी रहते हैं और वो इग्नोर हो गया, और धीरे धीरे करके वो इतना बढ़ गया कि वो मल्टीपल ग्रोथ्स हो गए हैं। नाउ वी हैव टू रिमूव दिस. I'll show you first of all what the disease is. You can see this disease. These are the warts. You can see how big they are. So we are going to remove them today, or as I told you, they are known for recurrence. They will come back, and he is prepared for that. ये वापस आएंगे तो हम निकालेंगे दोबारा से, इनको हटाएंगे दोबारा से, because even I am sure that 1 or 2 times they will come back. ये जो वायरस है बेसिकली कॉलोनीज में रहना पसंद करता है। अगर मल्टीपल होंगे तो ये ग्रो करेंगे, अगर थोड़ा सा होते ही इनको हटा देते हैं देन दे लीव द बॉडी। सो ही नीड टू बी कॉशियस कि जैसे ही दोबारा ये आता है वी नीड टू रिमूव इट। स्टार्टिंग द प्रोसीजर नाउ। You can see this electric spark. Electric spark जो आ रहा है, this process is called electro fulgration. इसमें basically जो light energy है, this is like melting away. Give me pause, please.